Good morning, dear students. Welcome to Silver Bells Mansarovar Online Education. Myself, Vinod Trivedi. Today, we are going to discuss figures of speech. Do you know, students, what is figures of speech? A figure of speech is a creation of special effect by the poet to draw the attention of the reader. Okay, so what is figures of speech? We can say anything in a two way. One is figurative way. It means by using different figures of speech, and we can say in an ordinary language also. Okay, so sometimes people do not focus on in ordinary language, okay, especially in poems and all that. So poet like to use different kind of figures of speech for creating effect in their creation like poem. So in this video we will discuss different figures of speech. So let us start with one. The figures of speech are follows. First one is simile. May you heard the word simile? Direct comparison is made between two unlike objects which have at least one common point. Words like or as are used for comparison. Okay, so there are two unlike objects, not same object, but they have one common point, and by using simile we can make direct comparison. Okay, so see the example. I see the daisies. Daisies, it means, okay, the flowers of mountain shine like stars. Stars, you know. So there is one common point is shining. Okay, so here there is direct comparison between daisies and stars. Okay, has been done. So it means I see the daisies shine like stars. Okay, so this is a effect, okay, which one has created by the पोएट. मतलब कि जो डेजीज जो फ्लावर्स है वो स्टार के जैसे शाइनिंग कर रहे हैं. ओके, सो एनीवेयर यू विल सी लाइक, अदरवाइज एज. ओके, यू कैन से इट इज अ सिमिली. देयर इज अ कीवर्ड फॉर सिमिली, लाइक एंड एज. ओके, एंड यू हैव टू थिंक मोर अबाउट इट ऑल्सो. देयर इज वन कॉमन थिंग इन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट. ओके, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट में वन कॉमन थिंग होगी. दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे रहा हूं, सपोज इफ यू वांट टू से ही फाइट्स एज लायन. ओके, सो ही फाइट्स एज लायन. तो दो मतलब कि अनलाइक ऑब्जेक्ट है ही, बराबर, मतलब कि प्लूरल, सॉरी सिंगुलर थर्ड पर्सन है, कोई पुरुष के लिए बात की गई है, और दूसरा कंपेरिजन किसके साथ किया गया है? लायन, मतलब कि वो फाइट लायन के जैसी करता है. ओके, सो he fight as lion, otherwise he fights like lion. So there is direct comparison between lion and human being. Okay, after this we will see second one, metaphor. What is metaphor? Implied simile. This is also one, okay, kind of simile, but the structure is different. We will see indirect comparison between two unlike objects. Okay, in simile we have seen direct comparison, but over here in metaphor we will see indirect comparison. Indirect comparison between two unlike objects where comparison is taken for granted. It means simile में उसके जैसा दिखाया होगा. ओके, आगे वाला एग्जाम्पल अगर याद करें तो डेजीज और स्टार्स एक जैसे दिखाए गए हैं, और यहां हम देखेंगे वो ही है. बाय विच विल सी. ओके, डिस्केंट डार्क शेडो ऑफ ब्लैक क्लाउड्स प्रेग्नेंट विथ वाटर ऑन द मर्मरिंग ब्रांचेस ऑफ द बैम्बू बुश. सो इट मीन्स यहाँ पोएट ने ये दिखाने का ट्राई किया है कि डिस्केंट डार्क शेडो ऑफ ब्लैक क्लाउड्स, मतलब कि बारिश की जो मौसम होती मानसून में, ओके, जो ब्लैक क्लाउड्स अदर शेडो प्रेग्नेंट वाटर, मतलब उसमें पानी भरा हुआ है,
ऑन द मर्मरिंग ब्रांचेस ऑफ द बम्बू बुश, मतलब कि क्लाउड्स, ओके, और डार्क शेडो दोनों एक ही बताया है। दोनों मतलब कि मरमरिंग कर रहे, बातें कर रहे हैं बैम्बू बुशेस, मतलब कि जैसे बैम्बू बुशेस पे बारिश होती है जो आवाज़ आता है, वो कंपैरिजन किया है। ये एग्जांपल थोड़ा हार्ड है, मैं दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज महाराणा प्रताप वॉज लायन इन अ फाइट, ओके, महाराणा प्रताप वॉज लायन इन अ फाइट। तो महाराणा प्रताप लायन के जैसे थे, पर यहाँ ऐसा नहीं बताया महाराणा प्रताप एक लायन थे, जब फाइट होती थी तो वो लायन के जैसे काम करते थे, पर लायन के जैसे मतलब सिमिली हो जाता है, यहाँ तो लायन खुद है। महाराणा प्रताप वॉज लायन इन अ फाइट, इट मीन्स महाराणा प्रताप लायन थे, जब फाइट करने का टाइम होता था वो लायन थे। तो ये मेटाफोर है, इम्प्लाइड सिमिली ही है, बराबर। एज या लाइक हो तो सिमिली समझना, और ऐसे डायरेक्ट मतलब कि इनडायरेक्टली उसका कंपेरिजन किया है तो मेटाफोर समझेंगे बेटा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, personification. Personification. Inanimate object and abstract notion are said to have human qualities. Over here, okay, you will see that some object they have a human qualities. Okay, which are human qualities? Like we can talk, okay, we can walk. Human qualities, as you can understand, people what they are doing, human, they can think. So such kind of qualities, okay, has been given to the object. So see, the little waves with their soft white hands efface the footprints in the sand. The little waves with their soft hand, okay. So generally who has, okay, hands? Human beings, okay. We can say animal they have also, but like this is just like living, okay. So the little waves with their soft white hand efface means remove the footprints in the sands, sorry, in the sands, मतलब कि सपोज बीच का एरिया है, सी शोर है, वहाँ लोग चलते तो फुटप्रिंट्स हो जाती है, पर फिर क्या होता है, एक वेव्स आता है, वो वेव्स उसको इरेज कर देता है। तो ये वेव्स को क्या दिया, ह्यूमन क्वालिटी दी कि अपने सॉफ्ट हैंड से उसको मतलब कि इरेज कर देता है। इट इज़ इम्पॉसिबल वेव्स के लिए, पर एक इफेक्ट क्रिएट की है पर्सनिफिकेशन का यूज करके। तो यू हैव टू सी, ओके, इफ एनी ह्यूमन क्वालिटीज, ओके, has been given to any objects, so we can say it is personification, okay. Okay students, now number 4, apostrophe. Do you know what is apostrophe? A direct address is made to a non-living or abstract idea, okay. Direct address is given to non-living or abstract idea or inanimate object as if it were present and capable of understanding, okay. कोई ऑब्जेक्ट है जो अंडरस्टैंड कर सकता है, who can understand, okay, generally human beings, okay. But over here in apostrophe you can see that object, otherwise any abstract idea, can have ability to understand anything. See the example, love come with me where coils or from flowering glade and glen. Flowering glade means mountainous area or glen means ghatia, okay. So love come with me, so love is one kind of idea, otherwise we can say abstract idea, come with me. Then who can come, who can follow anyone, okay. Those who have understanding power. But over here poet has shown, okay, understanding power to love, there is a abstract idea in apostrophe. Now next, alliteration, okay. Alliteration, in this figure of speech there is a repetition, try to understand, repetition of consonant sound, especially in the beginning of words, okay. You will see a repetition, okay, of consonant sound. You see
a flowery band to bind us to the earth. Okay, flowery band to bind. Okay, so there is a repetition, bb. Okay, you can say, again I'm telling you, a flowery band to bind. Okay, there is a repetition of consonant. You know which are the consonant and all that. Okay, so in alliteration, by which way you can identify there is a repetition of consonant. Okay, and especially in beginning of the word. Okay, in beginning of the word you can see b is over here, a flowery band b and to bind b. Okay, both are okay, especially in the beginning of the word, the letter b. Okay, now next, repetition. Okay, in alliteration also repetition, but what say, consonant repetition, and the repetition figure of speech is different. Okay, now let us start about it. Repetition of word and phrase to increase the musical effect of poem. Okay, for making musical effect, repetition is used. Okay, effect of the poem. Down dropped the breeze, the sails dropped down. You can say down and down. Okay, the total word you can say, down dropped the breeze, the sails dropped down. Okay, so over here what is this? Words, otherwise phrases, it will be repeated. Okay, it will be repeated. And number 7, okay, this is last for this video, tautology. Okay, what is tautology? Unnecessary use of words or ideas which do not add to the meaning but repeat it. Okay, unnecessary, कि जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, okay, पर उसका यूज किया गया होता है. यू कैन से बाय विच वे, क्योंकि एक वर्ड से पता चल जाता है, फिर भी कभी कभी बाय यूजिंग टोटोलॉजी. ओके, जो मीनिंग जो है वही रहता है, पर वर्ड्स यूज किए गए हैं. वी कैन सी एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. ओके, endless mountain. Okay, this is means without having end, and immortal means जो जिसका अंत नहीं है. Okay, so where you can see 2 words have been given, an endless fountain of immortal drink. Okay, तो यहाँ 2 जो words जो है यहाँ रखे गए हैं. Okay, unnecessary word or idea which do not add the meaning but repeat it. Okay, an endless fountain ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. यहाँ भी एंडलेस का मतलब जिसका अंत नहीं है, और इमॉर्टल का मतलब भी जिसका अंत नहीं है. ओके, तो दोनों एक ही मीनिंग बता रहे हैं. सो बाय दिस वे वी हैव डिस्कस्ड, ओके, 7 figures of speech. Remaining will discuss in the next video. Okay, you try to understand, and you have to write down these figures of speech in your grammar notebook. Okay, in next examination we will ask from figures of speech also. Thank you, have a nice day. And suppose if you have any query, any question, okay, you can send message me also. Thank you, have a nice day.